Call is not available on this number. It will be resumed post recharge. या नंबर पर इनकमिंग कॉल उपलब्ध नहीं है. रिचार्ज नंतर ते परत सुरू करण्यात येईल. Hello. 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 Hello, Zoya. Hello. So, dear student, today we are discussing about the nucleus. Nucleus is one of the cell organelle or cytoplasmic component which is present in the cytoplasm, and this nucleus is a very much important cell organelle. It controls all metabolic processes and hereditary activities of the cell. The nucleus was first discovered and named by Robert Brown in 1833. The nucleus is found in all the eukaryotic cells of plants and animal cells. The cell is called as a living cell whenever the cell is present a prominent nucleus, and if the nucleus is not present in the cell, such cell is called as a dead cell. Such cells are not survive for long period. It becomes perish.
So such type of a yes, nucleus is a one of the most important cell organ. सुने आ रहा है क्या जोया? हेलो हेलो. So see here, this is the structure of a cell. Sorry, this is structure of a nucleus. This is a rounded portion, spherical portion, in which there is the granular upper portion is there, from which there is a ribosomes are there is a present, and this is a nuclear pore here. This is there is a just like a pit-like structure is present. This is called as a nuclear pore, and this is in the center. This is a nucleolus, and these are they having in the nucleoplasm region. This is the nucleoplasm region contains chromatin, and this is called as a chromosome. It is chromatin because these are there is a very much a network of there is a chromosome. So that it is a chromatin, and this is nucleoplasm, and this is the first cover of that is a nucleus. So that is called as a nuclear envelope, and this is a nuclear lamina. So this is there is a the externally nucleus it looks like the structure of it. Then internally this nucleus is like this manner. This is a next to the this nuclear envelope. This is a single cell, a plasma membrane, and this is cytoplasm. And this cytoplasm contains all these cell organelles present, particularly mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, ribosome, lysosome, peroxisome, all these present, in which this is a one of the most important is the nucleus, and the nucleus contains nucleolus, and it is a nuclear membrane, or it is also called as a nuclear envelope. And these are the centrioles, two pairs of centrioles, which they are there is a you by having the role in during the cell division particularly. Then this is a here a types of Nucleus. nucleus. Usually the cell contains single nucleus. It is called as a mononucleate. जिस सेल में एक ही न्यूक्लियस रहता है उसको मोनोन्यूक्लिएट बोलेंगे. However, certain cells may have more than one nucleus, and accordingly they may be called as a binucleate or polynucleate cell. एक से दो ज्यादा है तो बाय, और there is a poly, maybe multinucleate भी बोल सकते हैं हम इसको. The polynucleate cells of the animals are called syncytial cells, or the example is osteoblast. The shape of the nucleus may be spherical, elliptical, or discoidal. In certain cells, the nucleus is irregular in shape. So, bus shape में there is a ये irregular in shape भी है, particularly in the sleeper shaped bodies, paramecium contains there is a irregular shaped there is a nucleus may be seen. Then here there is a types of nucleus. Again, this is the size, the morphological features in which the size of the nucleus may vary from 3 micron to micrometer to 25 micrometer in diameter, and because of it is rounded in shape, the size is directly proportional to that of the cytoplasm. Cytoplasm के ऊपर इसका there is a size रहता है. If there is the area of the cytoplasm is more, there is the size of the nucleus is also more. Nuclear size may also determined by the number of chromosome or ploidy. If there is a number of chromosome is maximum, or there is more, the size of nucleus is also more. The chromosomes are present in that nuclear. There is a nucleoplasm. Nucleoplasm के अंदर chromosome है. For example, there is a human being 46 chromosomes are there. So at that time the two
the to put the 46 chromosome in nucleoplasm, the size is like that manner. So according to the chromosome number, the size also depends. The cytoplasm size also determine the size of the nucleus. वो भी determine करता है, chromosome भी determine करते हैं कि nucleus की size कितनी है. The nucleus of the haploid cell are smaller than that of the diploid cell. जो cell में there is a haploid n number of chromosome रहते हैं वो छोटे रहते हैं nucleus, और जिसमें diploid cells रहते हैं और there is a diploid nucleus chromosome है उसमें there is a size of the that nucleus is there is a more. So such type of thing, the size is depend upon different factors of the nucleus. Then this is the another nucleus structure. Nucleus is surrounded by nuclear membrane. First, it is called as a nuclear envelope. Envelope भी बोल सकते. Envelope means there is a cover or membrane. This envelope is comprised of two membranes of 5 to 10 nanometer thickness. दो membranes रहते, दो envelope रहते, connected with each other. The inner nuclear membrane support fibrous sheet called the nuclear lamina. The inner nuclear membrane is surrounded by the outer nuclear membrane. दो nuclear membrane एक दूसरे से जुड़े वाले हैं. The space है दोनों के अंदर. The space between the inner and outer membrane is known as perinuclear space. A fluid is there is a floating in between two nuclear, there is a membrane that is called as a perinuclear space. It is a 10 to 50 nanometer white fluid filled compartment. It is a fluid which is a white one. Then another features are nuclear envelope is perforated by nuclear pores. The nuclear pores, it is not uniform. Each pore has a diameter between 10 nanometer to 100 nanometer. It has been calculated that the nuclear pore accounts for 5 to 15% of the surface area of the nuclear membrane. There is a continuous movement of new molecules across the nuclear envelope through the pore. The nucleus is filled with a transparent semi-solid matrix known as nucleoplasm, or it is also called as a nuclear shaft. Like there is a in the cell cytoplasm, in the nucleus there is a nucleoplasm or nuclear shaft is present. The chromatin threads and the nucleolus remain suspended in the nucleoplasm. The nucleoplasm is composed of nucleoprotein, proteins, enzymes and minerals. So ये nucleoplasm में ये there is a different components are there. So this is there is a portion of there is a nucleoplasm. So this nucleoplasm is having there is a nuclear envelope or nuclear membrane which communicate with the cytoplasm. तो ये cytoplasm में communication रहना एक दूसरे से, इसलिए क्या रहती है there is a connected with each other. So such type of mechanism is present in nucleoplasm and cytoplasm. तो एक दूसरे से दो सेल जो रहते हैं वो भी कम्युनिकेशन रहता है दोनों में विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, और साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म में भी कम्युनिकेशन है. कैसा है कि देयर इज अ न्यूक्लियर कोर है उसमें, और वो कोर की वजह से देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, देयर इज अ टेक्स प्लेस between this cytoplasm and nucleoplasm. For example, there is a protein synthesis होता है. प्रोटीन सिंथेसिस कैसा होता है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म में का डीएनए मॉलिक्यूल है वो देयर इज अ साइटोप्लाज्म में आ जाता है न्यूक्लियर कोर के जरिए, और उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. ट्रांस बोलते ट्रांसफर और चेंज, स्क्रिप्ट बोलते लैंग्वेज चेंज करता है. एमआरएनए बन जाता है आगे, अब एमआरएनए बन के वहाँ पे उसके बाद वहाँ पे ये आते हैं राइबोसोम्स आते हैं और प्रोटीन तैयार होता है. देयर इज अ
चेन ऑफ अमीनो एसिड तैयारी, पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार हो जाती है। दैट इज द फॉर द सेक ऑफ दैट देयर इज अ सच टाइप ऑफ ए communications are there is a present in between these two plasms, nucleoplasm and cytoplasm. That is called as through the nuclear pore. Nuclear pore से वो there is a communicate करते. Then nucleoplasm contains several thread-like polystructures. उसको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर. उसमें क्रोमैटिन फाइबर्स भी है. During the cell division, they become thick ribbon-like structure known as chromosome. And chromatin is made up of a deoxyribose nucleic acid DNA and proteins. प्रोटीन से बने वाले रहते क्रोमोसोम और डीएनए से बने वाले रहते. The nucleus contains one or more spherical colloidal structures called nucleoli. The size of nucleolus is related to the synthetic activity of the cell. The number of nucleoli in the cell may be 1, 2, or 4. Chemically, nucleus contains DNA of nuclear origin, 4 types of RNA, 70 types of ribosomal protein, RNA binding protein, and RNA splitting nucleoprotein. So, nucleolus contains these types of a, there is a chemical composition present in the. सर स्प्लिटिंग क्या है? स्प्लिटिंग कौन सा ये स्प्लिटिंग न्यूक्लियोप्रोटीन है ये वाला. यस सर. हाँ, न्यूक्लियोप्रोटीन बोल के न्यूक्लियोलस में ये है वन ऑफ द कंपाउंड है न्यूक्लियोप्रोटीन बोल के. आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन है और आरएनए स्प्लिटिंग न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हो. आरएनए का टाइप है वो, आरएनए का टाइप है तो वो है न्यूक्लियोलस में. ये देयर इज अ कंटेंट है न्यूक्लियोलस का. तो ये देयर इज अ पोर्शन है देयर इज अ न्यूक्लियस के ऊपर से लेके अंदर तक जो जो चीजें रहती है वो चीजें डिस्क्राइब कर दी. और उसके बाद देयर इज अ फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या क्या रोल करता है. देयर इज अ सेल के डेवलपमेंट के वास्ते, सेल के देयर इज अ ग्रोथ के वास्ते, और देयर इज अ फॉर सेल के अपलिफ्टमेंट के वास्ते क्या करता है. न्यूक्लियस परफॉर्म मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन यूकैरियोटिक सेल. Just like the number one is the protection. Protection, the nuclear envelope of the nucleus protect the genetic material. तो जेनेटिक मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर एक ऑर्गेनिज्म में, उसका प्रोटेक्शन होता है. देयर इज ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के वजह से, न्यूक्लियर एनवेलप के वजह से. उसमें देयर इज ए एनवेलप है. DNA from the mutagenic substances present in the cytoplasm. Protection of DNA is essential because it is a genetical and hereditary material. तो साइटोप्लाज्म में थोड़े से क्या रहते ये म्यूटाजेनिक सब्सटेंस देते. वो क्या करते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर को चेंज करते, म्यूटाजेनिसिस करते. म्यूटाजेनिक एजेंट तो वो उसका सीक्वेंस चेंज करते हैं या फिर उसको देयर इज हार्म कर सकते हैं, या फिर ये देयर इज उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस रहते हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस भी रह सकते हैं थोड़े बहुत जो रिलीज करने वाले हैं दूसरे सेल ऑर्गेनिज्म में. तो वो सेल ऑर्गेनिज्म का वेस्ट मटेरियल और देयर इज अ डेंजरस मटेरियल जो भी है वो उससे प्रोटेक्ट करना है बोल के क्या करते हैं ये एक कवर डाले वाला रहता है. तो एक प्रोटेक्शन करता है जेनेटिक मटेरियल का. तो सबसे ज्यादा अहम जो मटेरियल है जो सेल का वो है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस रहा तो देयर इज अ सेल जिंदा रहता है. न्यूक्लियस अगर खत्म हो गया मर गया तो सेल पूरा देयर इज मर जाता है. तो विदाउट न्यूक्लियस सेल इज नॉट सर्वाइव. एक आधी बार दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, पेरोक्सिसोम है, स्पिरोसोम है, प्लास्टिड है, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो एक आधी बार कम ज्यादा रहे तो देयर इज अ सर्वाइव रह सकता है, देयर इज अ सेल. बट nucleus is that is not present, that cell is not survive for long period, that cell is dead हो जाता है, सेल पूरा मर जाता है. तो उसकी वजह से उस में न्यूक्लियस में अगर का जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो भी सेफ रखना बहुत जरूरी है जिससे कि हेरिडिटी कैरेक्टर उसके डेवलप होते. तो उसकी वजह से प्रोटेक्शन काम करने का काम करता है न्यूक्लियर एनवेलप, उसका ऊपर का मेम्ब्रेन. So that is a
under the guidance of this cell, nucleus is having, there is a protective covering, बोलते हैं nuclear envelope. अब उसके बाद सेकंड में है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज. तो न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में एक्सचेंज होता है. क्या एक्सचेंज होता है? mRNA synthesized in the nucleoplasm and discharged through the nuclear pore in the cytoplasm for protein synthesis. तो अभी जस्ट डिस्कस करा कि ये जो पोर रहते हैं, इसको जो ऊपर के डायग्राम में देखे अपन ने, ये जो डायग्राम में देखो, तो ये जो डायग्राम है, ये जो न्यूक्लियस है इसमें, ये न्यूक्लियस जो पूरा यूनिफॉर्म दिख रहा है यहाँ पे, ये यूनिफॉर्म नहीं रहता. यहाँ पे क्या रहते हैं, इसके छोटे छोटे ऐसे हर जगह ऐसे पोर्स रहते हैं, बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स. और ये क्रोमोसोम है अंदर में. ये जो क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमेटिक, ये क्रोमोसोम ये न्यूक्लियर पोर्स से आते हैं. यहाँ पे सब रास्ते आए इसको आने के, ये आके बाद में साइटोप्लाज्म में आ जाता है. तो दैट इज ए प्रोसेस ऑफ ए कम्युनिकेशन बिटवीन दिस साइटोप्लाज्म और ये देयर इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म. ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये जो ब्लू शेड दिख रहा है एकदम थोड़ा सा, कौन सा कलर बोलेंगे इसको, जामुनी कलर है ये थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा ये ब्लू कलर है. तो ये अलग अलग मटेरियल है, दोनों भी प्लाज्म है. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ऊपर की इसमें, और इसमें सेल वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है इसको. सही है, सेल के वास्ते प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके वास्ते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वास्ते में इसको एनवलप भी बोलते हैं, और सेल सैप भी बोलते हैं इसमें का. इसको सेल सैप भी बोलेंगे और साइटोप्लाज्म भी बोलेंगे. इसको अभी न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सैप भी बोलेंगे. तो डिफरेंट नेम्स आर देयर इज प्रेजेंट ऑन सैप और देयर इज सेल. तो ये जो सेकंड अपना फंक्शन है, तो ये देयर इज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज. दोनों में एक्सचेंज होता है. आजू बाजू घर रहते हैं अपन, ये तो क्या करते हैं अपन, कुछ पकाया अच्छा तो अपन इधर उधर एक्सचेंज करते, खिचड़ा पकाएगी दे देते, बिरयानी आएगी दे देते. वैसा ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है. तो वो टाइप का एक्सचेंज इनके पास भी देयर इज थोड़ी सी खिड़की है बाजू में, और वो फिर वहां से देयर इज ये एक्सचेंज करते हैं. तो न्यूक्लियो प्लाज्म जो है, इसमें से mRNA बाहर आ जाता है और साइटोप्लाज्म में आता है, और उन्हें क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस तैयार करता है वहाँ पे. तो ये संभालने का काम, ये देयर इज अ मशीनरी, ये न्यूक्लियस प्रोटेक्ट करके रखता है अंदर, और जब जरूरत होगी जब भी बाहर आके वो देयर इज अ चालू करता है प्रोटीन सिंथेसिस का, और वो प्रोटीन सिंथेसिस तैयार होने के बाद बॉडी को देयर इज अ एनर्जी देने का काम करता है. तो दिस इज देयर इज a correlation between this nucleus and there is a cytoplasm or nucleoplasm in cytoplasm. The third important function is the formation of other cell organelles. ये दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स भी तैयार करता है, देखो. So that's why it is very much important. Means there is the outer nuclear membrane gives rise to various cell organelles like endoplasmic reticulum, vesicles, Golgi complex and various lamellae. ये दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स को भी देयर इज एक प्लेटफॉर्म देता है, और देयर इज एक सबस्ट्रेटम देता है, जिसको ठहरने की जगह बोल सकते हैं आप, या फिर उससे उसके मेम्ब्रेन से दूसरे सेल ऑर्गेन्स भी तैयार होते हैं. तो दिस इज अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर इज a main cytoplasmic body that is called as a nucleus or cell organelles or cell component we believe. So we have discussed there is a protein synthesis under the guidance of nucleus. Nucleus के अंडर गाइडेंस में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जिससे देयर इज mRNA आता है, और देयर इज mRNA वो बन के पॉलीराइबोसोम हो जाते हैं, और देयर इज पॉलीराइबोसोम के बाद देयर इज पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन तैयार हो जाती है. So this is there is a polypeptide chain, that is a protein. Protein synthesis is under the control of nucleus. Nucleus के control में है वो. Then ribosome formation. Next is the RNA is main chemical component of ribosome. The nucleus synthesis ribosomal RNA, it combines with the protein and form a ribosome. तो राइबोसोम भी एक क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है जो साइटोप्लाज्म में रहता है.
तो ये इसके जरिए से ये तैयार करता है। तो rRNA is the main chemical compound of ribosome. The nucleus synthesize RNA, rRNA बोल के जिसको बोलते हैं, and it combines with protein and forms a ribosome. तो प्रोटीन से मिलके ये there is a ribosome तैयार करता है. So this is there is a again another function. Next is the heredity. Heredity भी under the guidance of this nucleus में है. The characters transferred from one to another generation, one generation to another generation by chromosome through the gene. The chromosomes are present and protected within the nucleus. तो हेरिडिटी कैरेक्टर इसको बोलते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन. जो जनरेशन टू जनरेशन हेरिडिटी कैरेक्टर का ट्रांसफर होते हैं, तो दिस इज थ्रू ए क्रोमोसोम से होते हैं. क्रोमोसोम वो हेरिडिटी मटेरियल है जिसमें डीएनए मॉलिक्यूल रहता है. तो ये हेरिडिटी को प्रोटेक्ट करना क्रोमोसोम को और डीएनए को, और वो हर देयर इज अ सेल में देयर इज अ ट्रांसफर करना, पर्टिकुलरली व्हेन सेल डिवीजन जब होता है तो वो देयर इज अ हर डॉटर सेल्स में ये प्रॉपर क्रोमोसोम देयर इज अ इक्वल अमाउंट में देयर इज अ ट्रांसफर करना, दैट इज द हेरिडिटी. तो माइटोसिस में ये हो जाता है. Mitosis is a specialized type of a cell division in which exactly similar daughter cells are formed, which are qualitative and quantitative distribution of genetic material. ये there is a definition है mitosis की, तो उसमें ये equally ट्रांसफर कर देते और वो उसमें और दो बनाते और दो बनाते, तो ये there is a ग्रोथ there is a बढ़ते रहते. तो ये है हेरिडिटी. दिस इज डन बाय न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के जरिए होता है. और देयर इज अ नेक्स्ट वन इज अ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन भी न्यूक्लियस के असर आता है. तो टिपिकल सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस इक्वल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन मटेरियल. तो सेल डिवीजन में एट द लास्ट स्टेप ऑफ द सेल डिवीजन, जैसे अपने प्रोफेस है पहली, उसके बाद कौन सी है, मेटाफेस है, अनाफेस है और टीलोफेस. ये चार फेजेस है सेल माइटोसिस के. उसमें की जो लास्ट फेज है टीलोफेस, उसमें दो चीजें होते हैं आखिरी में. तो पहला है देयर इज अ कैरियोकाइनेसिस. तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, दो न्यूक्लियस तैयार हो जाते हैं उसके एक के, और उसके साथ साथ में साइटोप्लाज्म भी देयर इज अ दो हो जाते हैं. साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस में देयर इज अ डिवीजन. कैरियन मींस ऑल्सो न्यूक्लियस, कैरियोकाइन, और साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस डिवीजन. तो साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है और देयर इज अ न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है, और दो इक्वल पार्ट्स में देयर इज अ बढ़ जाते हो. इस तरह से दोनों बराबर हो जाते. we cannot there is a distinguish or there is a we cannot there is a identify which is the daughter ones and which is the parent one. इससे सिमिलर सेल्स तैयार हो जाते. तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, इक्वल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है और क्रोमैटिन मटेरियल, दोनों क्रोमोसोम भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. फॉर एग्जांपल अपना देयर इज अ ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल अगर लिए पर, तो अपने पास कितने 46, तो डॉटर में भी कितने जाते हैं, देयर इज डॉटर सेल में भी 46. तो दिस इज देयर इज अ happening in this there is a during the cell division. So ये both processes carried out. तो इस तरह से there is a nucleus is performing is there is a contribution or there is a function during different processes of life cycle. लाइफ साइकिल के हर प्रोसेस में ये देयर इज अ पार्टिसिपेट होता है, और उसमें देयर इज अ कंट्रीब्यूट करके सेल का देयर इज अ डेवलपमेंट करता, और देयर इज अ फॉर ग्रोथ एंड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ देयर इज अ सेल. सच टाइप ऑफ ए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनिल. तो अपने को 4 सेल ऑर्गेनिल्स सिलेबस में इंक्लूड करने वाले हैं इस साल में. ये पेपर 15 में साइटोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसमें से ये एक न्यूक्लियस था. इसके बाद साइटोप्लाज्म में दूसरे भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, बट अपने को जो लेने के उसमें एक गोल्गी बॉडी है,
और उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद थर्ड वन वाला है जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्गी, ये तीन देर इज अपने को और एक साइटोप्लाज्मिक बॉडी बोल के देखना है। तो इसका क्वेश्चन कैसा आएगा कि देर इज डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ऐसा क्वेश्चन आता है फुल मार्क्स। तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, या फिर देर इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गॉल्गी बॉडी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा फुल मार्क का क्वेश्चन, या शॉर्ट में भी ER बोल के आ सकता है और गोल्गी बॉडी बोल के आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी मार्क्स इट इज आस्क्ड एट दैट टाइम यू हैव टू राइट द आंसर, वैसा आंसर आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये for there is as per theory is concerned, and then as far as practical is concerned, इसमें भी there is a short note, there is a एक spotting है प्रैक्टिकल में भी। तो ये जो 4 सेल ऑर्गेनेल्स है आपके, उस 4 सेल ऑर्गेनेल्स के फोटो, खाली फोटो जिसके नीचे नाम नहीं रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम रहेगी, गोल्गी बॉडी की डायग्राम रहेगी, या लाइसोसोम की डायग्राम रहेगी, या न्यूक्लियस की डायग्राम रहेगी, और वो कोई की डायग्राम है उसकी पहचान के उसके बारे में 4-5 पॉइंट आपको लिखना है। तो इसे 2 सेल ऑर्गेनेल्स आपको प्रैक्टिकल में उसका खाली चार्ट बताएंगे, उसका नाम हाइड करके छुपा के, तो उसमें आपको क्या करना है कि इधर इसके 4-5 है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो अपन देखें न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस अगर है तो उसका क्या लिखेंगे 4-5 पॉइंट स्पॉटिंग में। It is one of the most important portion of a cell. It is one of the a cell component or cell organelle, which is very much important among the all type of the cell organelle, because it is having there is a main, because of it is contains heredity portion, and whenever there is a nucleus is present in the cell is called as a living cell. If nucleus is not present, it is called as a dead cell. And this is contains chromatin reticulum. It takes part in the cell division, equal distribution of heredity material. ऐसे 2-4 पॉइंट आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज फॉर ए स्पॉटिंग पर्पस। तो ये देर इज स्पॉटिंग पर्पस के वास्ते है। और theory में आपको there is a with well labeled diagram and important there is a portions आपको ये mention करना पड़ेगा। तो in this way this is a cell organelle that is called as a nucleus। ठीक है, तो न्यूक्लियस ये आप बहुत पढ़ रहे हैं बहुत दिन से, या फिर पीछे क्लासों से भी, तो इसमें डायग्राम और उसका स्ट्रक्चर और उसके बाद इसके पॉइंट्स और फंक्शन ये निकाल के इसको सेव करके नोट्स बना के रख। ठीक है, हेलो। ओके सर। कुछ प्रॉब्लम इसमें और? नो सर। ओके।